पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आज नीट में आया था। सबसे पहले पेपर की बात करेंगे। फ़िज़िक्स पिछले साल से बहुत इजी आया था। केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड ही था। और बायो की बात करेंगे, लेंथ ही था बट इजी आया था, जो कि टेक्स्ट बुक से ही आया था। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बायोडाइवर्सिटी से आया था। इसमें क्वेश्चन आया था कि द विल ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे ये वाले ऑप्शन। इसका आंसर सेकंड है, जो कि हॉर्स हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन और एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड कोएग्जिस्टेंस। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें एयर पोल्यूशन जो कि नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। सब लोगों को पता है कि वो न्यूक्लियोलस होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। थर्ड का G1 फेज, इसमें अगर सबसे पहले इजी ढूंढे कि वो एस फेज में सिंस सब डीएनए ओकर्स, गो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन था, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन। देन एक और क्वेश्चन आया था जो कि इकोसिस्टम से आया था, प्रोडक्टिविटी पे। व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी इजी आया था। प्रोडक्टिविटी सिंपली रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ए का थर्ड, दो ऑप्शन में आ रहा है। और सी का देखें ग्रॉस ग्रॉस अगर हम नेट की बात करें तो सेकंड का फर्स्ट आएगा। और अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसका ग्रॉस आएगा। सी का आईवी वो इसका सेकंड ऑप्शन है। और फोर्थ क्वेश्चन जो कि ये भी इकोसिस्टम के से ही आया था। और एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आया था कि लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, जो कि गलत है। ए ऑप्शन हम वहीं पे काट सकते हैं। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड्स, बी ऑप्शन करेक्ट। पॉलीसेकेराइड्स अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, जो कि सही है। एडेनिन गन सब्सटेंस पायरिमिडिन, डी भी गलत है। जिनमें डी भी ऑप्शन भी वो भी गलत। इसका ऑप्शन सेकंड है, जो कि बी सी ई ओनली करेक्ट। Now we will move to next question. How many ATPs and NADPH molecules are required to make one molecule of glucose through the Calvin's pathway? ये भी easy है।
सॉरी। चलिए हम डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन जो कि बायोमोलिक्यूल से आया था। क्वेश्चन हो रहा था लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, जो कि गलत है। प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड्स, सही आंसर। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, जो कि सही है। और एडनिन एंड गुआनिन सब पायरिमिडीन, जो गलत है। ए एंड डी रॉन्ग है। जिनमें ए एंड डी होगा वो निकालेंगे। ए ऑप्शन ए ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन, अगर सी के बाद वो भी गलत, और फोर्थ वो भी गलत। इसका सही आंसर बी है। बी, सी एंड ई आर ओनली करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रेस्पिरेशन से आया है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATPs एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैलोन पाथवे। इसका आंसर 18 एंड 12 NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which of the following statements are not true regarding restriction endonuclease? They are also called molecular seizures। सही ऑप्शन ए, जिसमें भी होगा वो नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है जो कि है, इन morphology of root in angiosperms root hairs arises from which of the following region of the root? इसका सही आंसर है the region of maturation। which of the following is not a characteristic of plant cells in the phase of elongation? increased vacuolization, cell enlargement, new wall cell deposition। ये भी सही आंसर, cell enlargement, लॉरस कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस। जो इसका 103 का आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स? दे आर सब्स्टिट्यूट मिथाइनस, सही ऑप्शन। सीरिन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जो कि गलत है। जिसमें भी ऑप्शन वो गलत है। वो सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। वेलिन इज ए न्यूट्रल अमाइनो एसिड, सही। डी थर्ड डी ऑप्शन, वेलिन इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड, जो कि गलत है। गो इसमें बी एंड डी आर रॉन्ग। बी एंड डी पहला ऑप्शन बी एंड बी एंड डी, बी ए एंड सी इसका ऑप्शन थर्ड होगा। और एक क्वेश्चन जो कि द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस इज टू मेक द लीफ इम्परमेबल टू फंगल, गलत। टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, इसका 107 का आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1010 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो तो हमें पता है। बीटी कॉटन ए का सेकंड ऑप्शन। अगर बी की थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, सबको पता है थर्मोस एक्वेटस, बी का थर्ड ऑप्शन, बी का थर्ड। इसका सही आंसर 1010 का थर्ड है। अगर हम पेपर की बात करेंगे, इजी पेपर आया था, इतना मुश्किल नहीं आएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा ही जा सकता है इस साल। 113th question, which of one of the following disorder is caused by substitution of glutamic acid by the valine at the sixth position on of the beta globin chain of the hemoglobin molecule? इसका सीधे से आंसर सिकल सेल एनीमिया। एक क्वेश्चन 114, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया है इसमें, वो सेकंड ऑप्शन ए का। अगर कोडोमिनेंस की बात करेंगे तो इसमें स्किन कलर आएगी, पीलोट्रॉपी स्किन कलर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, इसमें पीलोट्रॉपी आएगा। ग्रुप सी का थर्ड, इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन है। अरेंज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आया है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले स्पोरोजेनिस टिश्यू बी आएगा, फिर उसके बाद आएगा पोलन मदर सेल्स डी, बी डी किस में आएगा, बी डी दो ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। फिर आएगा माइक्रोस्पोर
फिर है माइक्रोस्फेयर टेट्राड, ए, बी, डी एंड ए इसका आंसर सही थर्ड ऑप्शन है. Now we will move to next question. Heterophilous development in response to environment is an example which of the following phenomena? It is the example of. अगर heterophilous development की बात करेंगे, ये elasticity, इसको हम plasticity कहते हैं. जो भी प्लांट अपने आप को मॉड्यूलेट करता है, चेंज करता है, इसका ऑप्शन 114 का ऑप्शन फोर्थ है, प्लास्टिसिटी. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Exploring 117 question. Exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance is called as. It is called as. इसका ऑप्शन 117 का ऑप्शन फोर्थ है, जिसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग के नाम से मशहूर है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सबसे इजी, जो कि 10 बार आया है नीट में. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सबसे पहले हम डिनेचुराइज करते हैं, फिर एनेलिंग करते हैं, फिर एक्सटेंशन. इसका सही ऑप्शन ए है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज दिस 121 जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया है. द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटिकर includes cell structure, phylogenetic relationship, body organization, presence flagellum in reproduction is not the main criteria. is option A, B, D and flagella, जिसमें भी flagella होगा वो wrong है. C option A, B and E and A, B, D, E. D का है reproduction में includes का option फर्स्ट है. Now we will move to next question, जो कि reproduction in फ्लावरिंग प्लांट से आया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड सेल. इसमें सबसे पहले सेंट्रल सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जाइगोट एंड साइनर्जिड. सेंट्रल सेल भी हैप्लॉइड ही होती है, जाइगोट भी डिप्लॉइड होता है और साइनर्जिड सेल्स वो भी हैप्लॉइड. इसका आंसर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, जो कि सेकंड ऑप्शन है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज from biodiversity. Which one of the following is an in situ conservation method? इसमें स्क्रिप्ट ग्रूज वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इसका ऑप्शन बी है, वाइल्ड लाइफ. Now we will move to next question. 125 in Lake Operon, the Z gene codes for. It is easy, it codes for the beta galactosidase. इसका ऑप्शन फोर्थ है, 125. Now we will move to 126 question. 2,4D जो कि हर्बिसाइड के नाम से मशहूर. ए का थर्ड ऑप्शन, इसका सीधे से सीधा आंसर थर्ड ऑप्शन है, 126 का थर्ड, जो कि प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से आया है. अगर हम बात करेंगे जी ए एब्सिसिक एसिड, डी का सेकंड आएगा, डी का सेकंड. दो ऑप्शन में आ रहा है, लास्ट दो. अगर हम काइनेटिन की बात करेंगे, काइनेटिन इज न्यूट्रन टू मोबिलाइजेशन. ए का थर्ड किसमें, थर्ड ऑप्शन है, 126. एक और क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया है, जो कि पॉलमेटिक एसिड से आया है. इसका RQ वैल्यू निकालना था. अगर पॉलमेटिक एसिड जो कि बिटवीन, इसका सीधे से ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, बिटवीन 0.5 एंड 90525, second option 128. Now we will move to next question. That is from photosynthesis in flowering plants. The enzyme required for the carboxylation in the Calvin cycle is, we know that Calvin cycle, it is
Rubisco, that is RUBP, carboxylase, oxygenase. The 132 option second is the correct one. Then we will move next question, that is from again from biomolecules. The question says trypsin is a, it is an enzyme, first option third. Now the second, morphine. Morphine is an, it is an alkaloid, B का IV. The first one is correct answer, 130 का फर्स्ट ऑप्शन. अगर हम कोलिजन की बात करेंगे वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, डी का फर्स्ट ऑप्शन. नाउ अनदर क्वेश्चन जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आया है, 134. That is, which one of the following type of pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma? We know that that is the xenogamy. The third option, 134 का आंसर थर्ड है. Now another question from रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन आए हैं. ग्लाइकोलाइसिस, वी नो दैट दैट ओकर्स इन द साइटोप्लाज्म, फर्स्ट ऑप्शन का थर्ड, एक ही ऑप्शन से जो कि सेकंड है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज guys wait. Sorry guys. Now we will move to next question, that is 146 question number, that is from the respiration in humans. First of all we will discuss tidal volume, that is 500 ml. D ka second option, D ka second, that is first and third. Now that is again it is IRV, that is 1 200. C ka option first, C ka first option. There is only one option, that is third, 146 का third answer है. Now we will move to next question, that is from cell. Non-membrane bound cell organelle found in both prokaryotic and eukaryotic cell are, we know that everyone knows that is the ribosome, 148 का second option. Now we will move to next option, that is ecological, that is from ecosystem. That the question says the ecological pyramids represents the relationship between the organism at different trophic levels, and they are generally inverted. We know that the 10% law. The question से सीधे से आंसर इसका है pyramid of energy in pond ecosystem. We know that it is generally inverted. Always, it is, sorry to say, it is always inverted. Now we will move to next question, that is from reproductive health. The question says it's a contraceptive questions. That is first of all we will look at the diaphragm. It is barrier made up of rubber used by females. C का option first, C का first. Now we will Saheli. It is a newly made
oral contraceptive. It is that is D का option second, D का second. That only the फोर्थ ऑप्शन 146 का फोर्थ ऑप्शन है. अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. अगर हम मल्टी लोड 365 की बात करेंगे ये है कार्बन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. अगर हम 147 क्वेश्चन की बात करेंगे इसका आंसर फोर्थ होगा. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 151 जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेस. सबको पता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल सॉरी टू से स्ट्रेप्टोकाइनेस इसका काम होता है रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द blood vessels. एक ऑप्शन सेकंड, only option one and third. Now we will look to lipase. If you look at a lipase, it is a of a detergent formulation. The C का option IV, C का IV. Now we will look another cyclosporin A. It is an immunosuppressant agent. D का first, D का first. What? D का first. The only correct option in this is A का है second. First. हाँ, द ओनली करेक्ट ऑप्शन 151 का आंसर है थर्ड. अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग cell organelle and their inclusive. The endomembrane system includes Golgi complex, endoplasmic reticulum, and mitochondria. This option is wrong. Choose the A option, A and A. Second option and third option. Discover rough endoplasmic reticulum bears ribose on its surface. B is correct. The only correct option for the 152 question is fourth option. Mitochondria is a single membrane bound structure जो कि गलत है. इसका only 152 का correct answer है fourth जो कि B C D. Now we will move to next question that is 100. The question 100. This question. In a population of a grasshopper species, the chromosome number of some members is 23 and some of the other members possess 24. The 23 and 24 chromosome bearing members in this species are, we know that in a grasshopper the sex determination is XX, XO, the females are XX and the males are XO. This means the males have one chromosome less than the females. The 23 chromosomes is male and the 24 are female. The correct option for this question is fourth option. Another question that is from that is 158. If we look easy, सबसे पहले हम टेटनी की बात करेंगे. वाइल्ड कंट्रैक्शन ए का ऑप्शन थर्ड, ए का थर्ड. अगर हम बी की बात आर्थराइटिस, एवरीवन नोज आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट. द करेक्ट ऑप्शन for the question 158 is first. A का third, B का first, C का second and D का IV. Now another question 162. The human protein named alpha-1 antitrypsin obtained from the transgenic animal is used for the treatment of, we know that it is used for, it is alpha-1 antitrypsin also called as anti-elastase. It is used for emphysema. The correct option for 162 question is second option. Now we will look for another question that is, in which animal do haploid cell divide mitotically to produce gametes? We know that it is only male honeybee. 159 का first option.
Now another question, that is 168. Which of the following statements are correct with reference to human endoskeleton? This question is from Bones. Human cycle is monochondrial. That is absolutely wrong. It is bichondrial. Which of the following are correct? Which of the following A option is wrong? Now, the joint between any two adjoining vertebrae is a cartilage joint. That is correct. Option B is correct. If you look at the C in human beings, the number of cervical vertebrae is 7. That's correct. All ribs except last pair are the bicephalic. Wrong option. If we the D is also wrong. D option, it is wrong. A is wrong. B, C are correct, and the correct option for this is 168. Third option is the correct. Now we will look at another question, that is from hormones. The question 169 says cortisol. We know that it produces anti-inflammatory reaction. एक second option. Now aldosterone, we know that it helps in the stimulates reabsorption of sodium and water. B का third. B का third. The correct option for 169 question is second option. Now another question, that is 167. Select the incorrect statement with reference RH grouping. We know that irreversible fetalysis, it is a RH incompatibility. It is a condition observing having fetus with RH negative blood with mother RH positive. This is absolutely wrong because mother should be positive negative and the fetus is positive, so that it cannot produce any antibodies. The first option is wrong. The first option, the two RH in antigen is observing on the RBC in the majority of human beings. That is true. Before transfusion, RH should be matched. That C option is true. The CC option A and B. Now E option says erythroblast fetalis can be avoided by administering RH antibodies to the mother immediately after delivery of second children. That is wrong. A and E are wrong. 167 का आंसर फर्स्ट है. चलो गाइज, अब हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे. That question is from malaria. 170 question number. The question says the following are the statements of life cycle of Plasmodium. Arrange the following state in proper order. We know that this question is from malaria. Now we will talk about 170 question number. The following are the statements of life cycle of Plasmodium. Arrange the stages in the proper order. We know that this question is from malaria. The parasite reproduce asexually in RBC, bursting the cell. That is the correct one. And इसको order में लगाना है. सबसे पहले क्या है? First of all, female mosquito inject sporocyte into the human during bite. E is the first one. Then the sporocyte, they will reach the first liver
through the blood. E and D. E and D. A is not option. Third is not option, and the fourth one is not option. The correct answer for the question 170 is second option. Another question, that is 173. The question says a motor neuron carries a signal sent by the CNS to the sarcolemma. Another question, that is 174. The question says, sorry for disturbance. There is another question, that question is 172. The specific receptors for neurotransmitter in a synapse are present on. This question is from CNS. The question says the specific receptors for neurotransmitters in a synapse are present on. We know that they are present on post-synaptic membrane. The correct option for the question number 172 is first option. Another question, that question is from excretory system. The question says GGA, that is the juxtaglomerular apparatus, is a specific spatial sensitive region formed by the cellular modification in. We know that the GGA, the juxtaglomerular apparatus, that is formed between efferent, that is formed between proximal convoluted tubule and the efferent renal arteriole. The correct option for the question 175 is fourth option. Another question, that is question, we will discuss another question. That question is from 180 question. It is from ecosystem. The question says choose the correct statement regarding population interaction between two species. In parasitism and commensalism, only one species benefits and the other species is harmed. This option is not correct because in parasitism both species are harmed. In commensalism, one species benefited and one species harmed. Both species benefit in mutualism, that is correct. B option is correct. B option is correct. In parasitism, only one, in parasitism one is benefited and other is harmed. Only one species benefited and the other is harmed. That is the correct. The option for the 180 question is B and D are correct. Where is option B, D? And if we look, we will look at the question number. E option, that is in commensalism one species harmed and other is unaffected. The correct option for the question 180 is fourth. The option first is wrong because in parasitism one is benefited and the other is harmed. Go one, first option is not option. The correct option for 180 is fourth. चलिए 169 क्वेश्चन की बात करेंगे. The question says cortisol. We know that cortisol is an anti-inflammatory reaction produce करता है. एक ऑप्शन सेकंड आएगा, एक ऑप्शन सेकंड जो कि दो ऑप्शन में है. Then aldosterone, we know that it stimulates reabsorption of sodium and water from renal tubules. B का third. Then we will look at the that is progesterone. We know that progesterone, it, sorry to say, cholecytoskeleton, we know that it causes secretion, stimulated secretion of the pancreatic in the this. The third का IV. The correct option for the question 169 is second. चलिए अब हम
केमिस्ट्री की ओर जाते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करेंगे, मेरे हिसाब से बायो इजी आया था, बट पेपर के हिसाब से पेपर लेंथी था, इसके हिसाब से हम मॉडरेट कह सकते हैं, वरना इजी आया था। Now we will discuss another question from bio, that is, what is the probability of having children with O blood group where both mother and father heterozygous for A and B blood group? We know that they are heterozygous. That means if a father is IA, IO and a mother is also IB, IO, that is there is probability of 25% their children is maybe with O blood group. The correct option for the 144, that is fourth option. Fourth option is the correct one for the 144. Now we will look at this is arrange. It is so much lengthy question. I will not discuss this here. Another question 148, non-membrane organelle that is found both prokaryotes and eukaryotes. We know that that is the ribosome. The correct option for 148 is B. Now 146, that is question from the respiration in humans, that is tidal volume is 500 ml, IRV it is 2500 to 300, डी का सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ये भी अगर हम सी की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सी का फर्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन फॉर 146 क्वेश्चन नंबर इज थर्ड. Another question, that is glycolysis. We know that glycolysis occurs in cytoplasm. एक का थर्ड एक ही ऑप्शन था 135 का, that is second. एक और क्वेश्चन आया था जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया था, मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन ही होगा. Which one of the following statement is not true about the universal rules of binomial nomenclature? Both the words in a biological name, when handwritten or separated, underlined or printed, italic, that's the correct. The specific epithet in a biological name starts with a small letter, that is correct. The first word in biological name represents the species. The third option is not correct. The first word in a biological name represents genus. The correct option for the 131, that is the third option. Another question from another question 130, that is from biomolecule. The question says trypsin. We know that trypsin is an enzyme. A का ऑप्शन थर्ड. अगर हम बी की बात, मॉर्फिन, वी नो दैट इट इज एन अल्कोलाइड. बी का आईवी, एक ही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन. हमारे साथ एक और बंदा जुड़ गया है, यासिर अहमद भट्ट. पेपर की बात करेंगे तो इजी आया था इस साल, पिछले साल के हिसाब से उतना टफ भी नहीं आया था.